after that interfacing, you have I'm giving you an assignment on that. Okay, so with that we will finish with that embedded and C part of the coding of the subject. Okay, and there will be few more codes. Okay, like the statements I'll give you, and I'll give you the codes. Go through it, and if you have any queries, just let me know. But those are like simple things. I've taught you very complicated codes like keypad and LCD. So simple, you can really understand by yourself. I'll share my screen now with the code. मेरी आवाज अगर बीच में अटक जाती है ना तो let me know because I am not on a stable connection right now and I don't know when it will go down. It will mostly not, but still, just give me a call maybe. Okay, so here you go. So what you see on my screen right now is LCD ka assembly code, okay? And how we have done it is basically this code is if you look at it from a larger I mean, if you look at the larger picture of this code, you will find that this code is basically divided into three parts. Okay, first is initialization part. Okay, where we give some certain kind of commands to LCD for it to initialize like clear the screen, then what mode we want to operate our LCD in. Okay, such commands are there. Okay, so this part is that. Next part is command and data thing, and then calling a delay. Okay, so the thing is every time we give anything to LCD module, you have to remember that anyways, if even if you're giving a command or even if you're giving a data part, okay, you have to select command or data register. Okay, then you have to give high to low pulse and give some delay. Okay, remember these three things and you're done with your LCD thing. Just a second. So as you can see here, there is there are some commands that are being sent to accumulator. Okay, like 38H. This states that operate LCD in like uh, 16 is to 2 and 8-bit mode. Select two rows and 16 columns, it means. Okay, and 8-bit mode means all the 8 data lines we are using. Okay, LCD can be used in 4-bit mode also, but that code comes a slight different format. Okay, then there is another command. So after this, what have they done? They have called command function and delay function. Now command function and data function में एक ही difference रहेगा जो कि हमने रजिस्टर सिलेक्ट किया है, either command or data register. Okay, so if we look at this command function,
So this title is here. So this command function, we are saying whatever the data is on accumulator, which is the command or the data that we want to send to the output port. Okay, that is being moved here. Then clear p2.0, clear p2.1. Okay, so what is p2.0 and what is p2.1? So you know LCD module has these pins. Okay, RS, RW, and enable. Okay, so this is RS, which is register select. This is RW, which is read write mode selection. Okay, and this is high to low pulse. Okay, this is port 2.2. We are this is enable. Okay, RSRW enable. So we have given high to low pulse, high, then delay, then low, for the data to be latched on the output ports and for you to be seen on the screen. Okay, so uh, port 0 is RS register select. We have selected here what? We have cleared it. Means we have selected the command register. Okay. Then next what we have done? We have done clear p2.1 means RW clear किया हमने write mode में डाला है read mode में नहीं डाला है जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि LCD का जो कोड है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं लाइक 4 बिट मोड एंड 8 बिट मोड जब 4 बिट में होगा तो we'll have to write another function wherein we are checking a busy flag. Okay, busy flag, and for that we are reading something from LCD, right? That's why we need to put it in read mode then. Okay, not right now, but then when we are actually doing it. Okay, like the 4-bit coding with busy flag. Even 8-bit can be done with busy flag, but the seventh, the last bit of the data pins will be considered as a busy flag bit. So that comes in slightly different format. And then we'll be calling the delay and then the data. This command is gone. The next thing is when we actually starting to send the characters that we calling data write function and what data write is doing similar thing. Okay, copy paste of this function it will be, but only one change here. Here we have done set bit port 2.0. Here what we did is clear port 2.0. Okay, RS को हमने clear किया था, इधर RS को हम set कर रहे हैं. Okay, and can you tell me why did we set RS here? What is it doing right now? यहाँ पे RS सेट क्यों किया हमने, क्लियर क्यों नहीं किया राइट में, डेटा राइट फंक्शन में? Any idea? You are clear about it or not? I mean, you if you're not understanding, tell me. No, sir, not clear. Okay, okay. So ये जो है ना मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको. स्क्रीन दिख रही है ना व्हाइट बोर्ड वाली? Yes, sir. Okay, thank you. So suppose this is your LCD module. Okay, so यहाँ पर you have RS RW enable and then you have 1 2 3 4 5 6 7 8, right? So RS RW and enable. Okay, so when we are interfacing this to our controller. Okay, certain pins of controller will be connected to pins of this LCD module. Okay, so let's say we are connecting port 2.0 to RS, port 2.1 to RW, and port 2.20122 enable. Okay, so these are the pins that
from controller, and this is our LCD module. Okay, so RS is what? RS is register select. Okay, रजिस्टर सिलेक्ट वाली पिन. ओके, सो उसमें होता क्या है, जब हम उसको सेट करेंगे, सेट मीन्स वन करेंगे RS को, तो वी आर सेट सिलेक्टिंग डेटा रजिस्टर. ओके, and when we are clearing it means zero, what we are doing, we are selecting the command register. Okay, अब जब हमें कमांड देनी है एलसीडी को, कमांड मीन्स क्या, क्लियर द स्क्रीन. ओके, screen, not screen. Okay, clear the screen. Then we give some other commands like 80H. There are some other command like 35H, and each command is having different meaning. Okay, so ये commands है, ठीक है, जो एलसीडी को पता है अगर मेरे पास ये डेटा आता है तो मुझे यही चीज करनी है. ठीक है, so when we are passing these commands to LCD, thing is that what we are doing is we are first selecting the registers. I mean register. We are selecting the registers means data register or command register. Okay. If this pin is one, then it is considered to be data register. If this pin is zero, then it is considered to be command register. So जब हमने कमांड पास करी थी तो हमने ये इंस्ट्रक्शन यूज की थी, क्लियर पोर्ट 2.0. अब ये डेटा राइट फंक्शन है, सो इसमें मैंने क्या किया है, सेट पोर्ट 2.0, मतलब ये वन किया है, एंड आई हैव सिलेक्टेड डेटा रजिस्टर बाय सिलेक्टिंग वन ओवर हियर. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, सो ये डन. नाउ now what happened, now clear port 2.1. ठीक है, RS RW and enable port 2.0, port 2.1, port 2.2. So now what is port 2.1? RW. Okay, here we select RW से हम क्या करते हैं, रीड और राइट मोड सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, रीड और राइट मोड. ठीक है, and why is read and write mode there at all? Okay, so अगर ये LCD मॉड्यूल है, ठीक है, so read and write mode. So when we are writing on this LCD screen, we are using write mode. Okay, we are, when we are writing on the screen, we are using write mode, which is the case most of the times. Okay, so we basically what we do is we clear this bit. Read के लिए हमें वन सेट करना है, राइट के लिए जीरो करना है. ठीक है, रीड के लिए वन करना है, राइट के लिए जीरो करना है. तो if you google also, most of the cases you will find they have grounded this pin. And now what is mean by grounded, they have made it, they have grounded it means they have set it to zero all the times by default. Okay, and not by the code. हम ये the code से कर रहे हैं because you need to understand why we're doing it. Okay, even if you ground this pin, that will do it. Okay, because it will be zero all the times, right? It will not change as we are using our LCD in right mode all the times. Then what is function of this pin? Okay, why this read mode exists? This read mode is there, okay, when we are checking the busy flag. Okay, there is something called busy flag in this LCD. Okay, so busy flag is like, right now we are giving some delay. Okay, and we are waiting for LCD to complete the action during that delay time. But जब हम busy flag देंगे ना, तो delay नहीं देंगे, we will poll for this busy flag. Okay, poll means we'll keep checking the status of this busy flag. Suppose my uh, d d0.7 is the busy flag ka pin. Okay, on my LCD,
data pins show the head. So ये pin का I'll keep polling to this pin का status. Okay. Once this pin sets or resets, I can take the actions accordingly. Okay. अभी तक के लिए यही याद में रखो, ठीक है. बट बेसिकली अगर बताया जाए तुम लोगों को, तो हम ये रीड एंड राइट में से वी आर यूजिंग राइट मोड ऑल द टाइम्स बिकॉज वी आर राइटिंग द डेटा टू द मॉड्यूल, राइट. We are writing the data to the module. We are not doing anything so far. So writing the data means zero, means ground. Okay, that's why we have done clear port 2.1 means we have port 2.1 पे क्या है, RW है, इसमें से हमने सिलेक्ट किया W means write mode. Then set bit port 2.2 and clear port 2.2 with some delay. Set bit port 2.2 when delay, then clear bit port 2.2. Okay, ये क्या हो गया, हाई टू लो पल्स हो गया. एंड एलसीडी का ये थियरी है बेसिकली ऑपरेशन की, कि इनेबल इनेबल कब होगा, डेटा लैच कब होगा पोर्ट्स पे, व्हेन यू एक्चुअली गिव हाई टू लो पल्स ऑन द इनेबल बिट. ओके, सो पोर्ट 2.2 को हम एक बार सेट कर रहे, देन सब डीले दे रहे, ठीक है. एंड डीले देने के बाद फिर से इसको लो कर रहे, सो इट मींस हाई टू लो पल्स गई, देन व्हाटएवर द डेटा वी हैड सेट sent here will be there on the, will reflect on the output port. Okay, this is how it works. अभी समझ में आ गया थोड़ा प्लीज, आ गया ना, cool. Yes, sir. Okay, nice. So similarly जब कमांड सेंड करनी है, so we will send the command and then we'll call the command वाला function. जब डेटा सेंड करना है तो we'll send the data then we'll call the data वाला function. दोनों फंक्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा, रजिस्टर सिलेक्ट में. सिर्फ पोर्ट 2.1 वाला डिफरेंस नहीं होगा, पोर्ट 2.0 वाला डिफरेंस होगा. पोर्ट 2.1 में डिफरेंस कब आएगा, जब जब हम 4 बिट मोड में एलसीडी को यूज करेंगे. ओके, बाकी सब सेम ही रहेगा, सिर्फ आरएस हमारा चेंज होगा. आरएस मीन्स रजिस्टर सिलेक्ट होगा, कमांड करना है या डेटा करना है वो बस हम सिलेक्ट करेंगे. एवरीथिंग विल बी सेम, just data will change. Okay, even if there is a code, okay, you are executing and somebody asks you to execute something differently, okay, just check all the commands. Okay, suppose कल को अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट आता है कि एलसीडी का कोड लिखना है तुम लोगों को, लेकिन you have to write your name on the first row and your maybe roll number or university registration number on the second row. Okay, then what will you do? Okay, then you have to go through the commands. Okay, there is this one column that I have given you, right, which is having the command and its importance. Like ATH means this, 01 means clear screen. Okay, so similarly there will be command to, take your cursor on the second row. So when you are writing a roll number, then first you have to give the command to bring the cursor to the second row. Okay, and then you write it. So this is how it is. You basically check the command ka column and then you do it. Okay, it's very simple. You will know it when you do it. So दिस इज अबाउट द एलसीडी. एंड उसके बाद कीपैड का देखा हमने. ओके, क्विकली टेक यू थ्रू दैट एज वेल. आई होप that is still there on your mind. Keypad का you know, keypad. Yeah. So so keypad का code is very small. Okay, in C. If you write in assembly, it's huge. Okay, so I have given C code only directly for keypad. Rest all codes are kind of similar only, but a keypad code gives you a lot of difference. So keypad का basic theory क्या है? Okay, so this is the code. Okay, let me, rather than this, let me share.
just explaining the principle so that will be done with that logic, so you can also write. So how keypad actually works is, suppose this is controller, okay? This is the controller, and here are the 8 pins. Hmm. So keypad is something which is, connection of two things, and we are detecting it by considering first 4 pins, 1, 2, 3, 4, as a row, and next as a column. Okay, these are row and these are column. Okay, this is how it works. So ये row है, so what I'll do is I'll remove this part. Introduce this. Hmm. So I'll extend it for you. Shit, wow. Hmm. And column. Okay. Or something like this. Okay. So this is your keypad. Okay. अभी keypad ऐसे दिख नहीं रहा है लेकिन keypad है, ठीक है. So what we are detecting is ये कीज है तुम्हारे, ठीक है. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, वॉट एवर. ओके, दीज आर योर कीज. ओके, मतलब इधर एक स्विच होता है, स्विच. ओके, दिस इज अ स्विच. व्हेन यू प्रेस अ की, ये दो चीजें शॉर्ट हो जाती है, ठीक है. मतलब इट विल शॉर्ट वन रो, एक्चुअली it's this way. Okay, so it will short one row with one column. Okay, it will short one row with one column. Okay, so we are detecting which row and which column has gotten shorted, and by this we are detecting which key got pressed. Okay, so अगर ये दो ends है, ठीक है, एक रो है and एक column है. Okay, and these both on pressing are getting short. Okay, ठीक है. So both of them, हम पहले करेंगे क्या, हम इसको और इसको डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पर ले आएंगे, चारों रोज एंड चारों कॉलम्स को, और चार रोज एंड वन वन कॉलम को, ठीक है. एंड देन वी विल डिटेक्ट कि मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या था, अभी शॉर्ट हुआ है तो दोनों भी रो एंड कॉलम विल कम एट सेम पोटेंशियल, राइट. सो वी विल डिटेक्ट कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम चेंज हुआ है. ओके, हम रो या कॉलम दोनों में से एक को पहले किसी भी नोन स्टेट में डालेंगे. एक तो वो लो रहेगी या फिर हाई रहेगी, ठीक है. ओके, मोस्टली रोज को ही करेंगे, 0, ठीक है. एंड उसके बाद वी विल सी विच कॉलम है चेंज्ड इस इट्स पोटेंशियल, एंड उसके हिसाब से वी विल डिटेक्ट द की प्रेस. ओके, सो एंड इसके लिए तुम्हें एलसीडी का कोड भी लगेगा. एलसीडी का कोड क्यों लगेगा, जो भी की प्रेस हुए दैट यू हैव टू प्रिंट ऑन द एलसीडी. So that is the thing. Okay, so the code, in the code, what we learned in the last lecture is, we had set all the columns one first. Okay, and then we used a switch case in which we are making, like, first of all the columns are 0, then only case 0 में हमने column 0 को 0 किया, and then we are checking which row has changed its potential. Okay, if row 0 had changed, then keypad का 0 and column. Okay, wait. Sorry, I thought I was sharing my whole screen. So this is the code. Okay, this is the main logic. Rest of the code is there, but it's the main logic. So sorry. Yeah.
So C0, C1, C2, and C3, all the columns we have made one, okay? We have made it one, okay? Then we have written this cases, okay? Now what is case 0? Let's see. So case first, I mean, understand we are changing the status of a column, okay? Now I know कि मैंने कॉलम जीरो का स्टेटस चेंज किया है एंड विच रो विथ रिस्पेक्ट टू दैट कॉलम इज चेंजिंग इज स्टेट आई वांट टू चेक दैट ओके सो केस जीरो में अगर मैंने कॉलम जीरो जीरो किया आई नो दैट कॉलम जीरो इज जीरो ओके सो दैट्स द थिंग सो सी जीरो इज जीरो हियर सो यहाँ पे होगा क्या it's checking if R0 is 0, R1 is 0, R2 is 0, or R3 is 0. Which row out of the four rows we have had changed its state or has become 0 along with the column. Okay, so that we are checking it. So if you noticed this line, here we have made the column 0. Okay, मुझे C0 बताया 0 है, ठीक है, मतलब मैंने खुद से 0 किया है उसको, ठीक है. देन मुझे पता है कि C0 0 है, तो या फिर जो भी कॉलम है वो 0 है, तो मेरा रो भी 0 हो जाएगा अगर की प्रेस होता है तो. लेकिन उसके वो 0 डिटेक्ट करने से पहले मुझे उसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज एट अ नॉन पोटेंशियल. सो मैंने ऑल द रोज को एक नॉन पोटेंशियल पे, मतलब हाई पोटेंशियल पे डाल दिया. देन आई एम सिंपली डिटेक्टिंग विच रो हैज चेंज्ड इट्स स्टेट and I'm detecting the key press accordingly. Okay, so this is how it works. Okay, and ये कॉलम की वैल्यू डिटेक्ट करना है, मतलब ये कॉलम वाइज वर्क होगा. ओके, कॉलम हमारे चार है इसलिए C0 I mean column starts from 0 and is less than 4 means 0 1 2 3. Okay, 4 and column plus plus. So चार बार ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. अभी कॉलम की वैल्यू 0 है. ओके, कॉलम की वैल्यू 0 है. All the things we have set to 1, then all the rows also we have set to 1 according to the switch. Okay, a case. And you know this, what why we do it, because we want to set it at some potential that is known to us. Okay, that's why we do it. And then we are detecting which row had changed its state. I mean, this code is really easy to understand and the LCD is a bit complicated. So this is how we're detecting a key press. Okay, and वो जो मैट्रिक्स बनाया है हमने वो इधर ही डिक्लेयर किया है यहाँ पर. Okay, so 4:4. Okay, bidirectional, and this is how we are detecting it, and this is how we're passing it. This is the main function. Yeah, so key pressed is 0 and column. The column का जो value है, it will depend on the for loop. Okay, if it's 0, then 0 by 0 का जो भी value है, that will be displayed, which is 1. Okay, कीपैड का तुम लोगों को क्लियर है कोड या नहीं है? सर एकदम अच्छे से नहीं है, लेकिन मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया कि मतलब कैसा रहता है वो. हाँ, मतलब तुम लोगों ने खुद से देखा नहीं है ना कोड, अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, इसलिए when you go through it by yourself you'll understand. अच्छा, ये चेंज है, ये वोल्टेज चेंज डिटेक्ट कर रहे हैं. ओके, then you'll understand कि okay, this loop is working this way. You have to work through it, then only. And accordingly we pass the key press. अभी वो की ये जो वैल्यू है तुम डिसाइड करोगे, ठीक है. जैसे मैंने सिमुलेशन पे लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि आई हैव डिफरेंट कीपैड. ओके, कीपैड पे सिंबल मेरा अलग है लेकिन मैंने कोड में अलग डिक्लेयर किया है, तो इट विल बी डिस्प्लेड डिफरेंटली. तो मुझे प्रोटेस्ट, लेट मी ओपन दैट. अभी आई डोंट नो which project is open in that.
full keypad. ये basic LCD open है भी. Okay. ये कर रहा है काम. Let me share my screen. So the point I was trying to make is the way this LCD works, the keypad works, will be clear. Window protects. So in this keypad, देखो हमारा जो 4:4 का मैट्रिक्स था उसमें we have declared as 1 2 3 4 5 6 7 8 something like that, right? 1 2 3 4 5 and this is the keypad. Okay, पर इस पे ये अवेलेबल था मैट्रिक्स वाला, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया. लेकिन कोड में मैं जब यहाँ पे 7 प्रेस करूंगा ना तो इधर 1 डिस्प्ले होगा, बिकॉज कोड में मैंने वैसे लिखा है, मैंने मैट्रिक्स वैसे डिफाइन किया है, ठीक है. So if I wanted these values to be printed, then I'll look at my keypad ka hardware model, what are the requirements, and accordingly I'll code. So LCD ke connections also you can appreciate here. RSRW enable are connected to port 1, 0, 1 and 2, okay, and port 2 is connected as data. Port 2.0 is data, ठीक है. Port 2.0 to port 2.7, D0 to D7, okay. Then RSRW enable is with port 1, 2, I mean port 1 का 0, 1, 2, ठीक है. And the keypad interfacing is port 3, okay. Port 3 का 0, 1, 2, 3 are the rows and 4, 5, 6, 7 are the columns. Okay, so let me quickly run this for you. So as I told you, code में हमने ये 1 2 3 4 किया. So let's see 1. Okay, 1 2 3. अच्छा, these are A B C D. Star 0 then hashtag and D. Okay, A B C D is star and hashtag. So this is how it is done. So accordingly, okay, कोई भी keypad हो, you can design it with the same mechanism sort of. So this the LCD simulation. अच्छा, इसमें दोनों भी हो गया, LCD का भी हो गया और ये भी हो गया. So if you look at the code, LCD का code basically, so you will find that in this keypad, this is the delay wala function, then this is CMD. CMD में RS is 0, RW is 0, write mode C, command mode. If data mode, then RS will be 1. See, data में RS will be 1. So everything is, these functions are basically copy paste, just RS का difference होता है, ठीक है. That's it. And then LCD init function है, LCD init में हमने initialize किया है, main में लिखा है, and then when we are detecting a key press, and then if key got pressed, then we are calling LCD data as a function, and we are passing that key which has been pressed, and that data has been displayed. So this is how it works.
अभी I think we should stop here for this coding thing, okay? And if you still got any, doubts to clear, then you can reach out to me, in my free time or your free time. Anytime you want to reach out, you can do that, okay? We'll take it that way. And okay, now we will start the new thing, which is our next unit, RTOS, okay? RTOS में अभी basically ना theory ज़्यादा आएगी थोड़ा, RTOS and ये सब चीज़ें. RTOS भी new है तुम लोगों को, तो try to understand it. Very easy thing. You guys must have learned system programming and operating system, right? SPOS था हम लोगों का भी. सर आई गेस सिस्टम सिस्टम प्रोग्रामिंग हुआ है। So मतलब उसमें भी theory थी, उसमें algorithms वगैरह थे, right? So art of unit is sort of similar, no algorithms नहीं है ज़्यादा, लेकिन similar ही है, theory है mostly, ठीक है. And you will have, this few codes and RTOS का some part, okay, in your TA2, okay, and introduction part. I mean, I'm trying to cover the fourth unit as well. Let's see till where we get with our unit 4, but कोशिश तो यही रहेगी कि we cover most of the things before the exam. Okay, but it's easy, it's not a rocket science, okay? Hardware, software, code design patterns, industry practices, and design tools and ID simulators and emulators. So actually fourth unit का ना most of the part हमने मतलब किया, मतलब simulators, emulators वगैरह पढ़ना है उसमें. तो simulator tool we are already studying. Then design for testability and debugging techniques and power management. Okay, power system design. It is also easy and interesting thing. Then system techniques for low power design and power consumption analysis and optimization and system integration and testing. Then hardware software testing challenging. Okay, fine. Fourth unit is also easy. Okay, most of the parts we have done while we are studying the course. Okay, so don't worry about it. Just be in the lectures. You will be through it. Okay, so let's take 5 minutes break and be back with new unit and fresh सर mind. Okay, yes. हाँ सर, एक डाउट था कि मतलब जब मतलब ये एलसीडी डिस्प्ले में मतलब जैसे पोर्ट पे डेटा सेंड करते हैं एक्यूमुलेटर से वगैरह, तो पोर्ट पे डेटा स्टोर कैसे होता है? Oh, data store. I mean, you mean it is retaining the data on the हाँ display. Okay. So LCD display है, ठीक है. So मैंने जैसे बताया तुम लोगों को कि उसके खुद का set of commands है, ठीक है. मतलब LCD in itself has some processor sort of, right, processor. LCD को RAM रहती है, RAM, ठीक है. LCD मॉड्यूल है ना, उसमें RAM होती है. As long as you feed the power, it retains the data because RAM is volatile memory. Okay, LCD में RAM होती है. That's why it retains the data. और सर सपोज जो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम है, तो हम्म. उसमें मतलब सपोज नंबर्स नहीं, अगर सिम्बॉल्स डिस्प्ले करने होंगे तो फिर कैसा रहता है? कर सकते हो तुम. तो जो हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया है ना पहले ही, मैं विंडो शेयर कर रहा हूँ मेरी. सो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, यहाँ पे. सपोज अभी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कैलकुलेटर का कोड करना है ना, तो मैंने ABCD लिखा है ना. द प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई स्टार, ये चार डालो, ठीक है. एंड बाद में क्या करना है तुम्हें, सिर्फ तुम्हें डिटेक्ट करना है कि ये जो है उसमें से कौन सा साइन एंटर हुआ है, ठीक है. इफ इट्स प्लस, देन प्लस का कोड लिखना है, एडिशन का कोड लिखना है. इफ इट्स माइनस, मतलब ऐसे फंक्शन लिखने हैं तुम्हें फिर, ठीक है. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. जो भी की प्रेस हो तुम्हें इसी पे, यही मैटर करेगा.
इसलिए मैंने दिखाया कि वो जो कीपैड था तुम्हारा, सिंबलिकली इट इज डिफरेंट, बट इट इज वर्किंग। क्या कर रहा है वो, वर्क क्या कर रहा है, जो मैंने कोड किया है वो काम कर रहा है उस पर। ठीक है। सो की कोई भी प्रेस होने दो, बैकएंड में क्या हो रहा है वो भी बताया मैंने, बस तुम्हारा रो एंड कॉलम शॉर्ट हो रहा है ऑन ए की प्रेस। दैट्स व्हाट, दैट्स ऑल व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके। तो वो शॉर्ट की को तुम्हें मतलब कंट्रोल का बताना है कि तुम्हें करना क्या है वो शॉर्ट होने पर, तो वो तुम डिसाइड करोगे। ओके। हो गया क्लियर, या यू स्टिल हैव समथिंग यस इन सर, यस दिस? सर। नहीं नहीं, हो हो गया गया। क्लियर। सो ये कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। ABCD भी लिख सकते हो पूरी, ना पूरी लेके। ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क मी। नो सर। ओके, देन टेक अ ब्रेक, 5 minutes break, be back on time. Okay.
Hey guys, are you back? Hello, are you there? Can you hear me? Okay, let's wait 4 more minutes. Let me know once you guys are back, okay? So that we can start. Okay, so अभी स्क्रीन पर दिख क्या रहा है तुम लोगों का? सर वाइट बोर्ड। Okay, cool. So starting with RTOS, okay. So RTOS में basically हम पढ़ेंगे यार basic चीजें, ठीक है. RTOS होता क्या है? Okay, what is RTOS? Then like something like RTOS is known for scheduling. So वो scheduling क्या है, कैसे होती है, so वो सब चीजें देखेंगे. Priorities क्या होती है, okay. Then there are some other things like I mean there are different flavor like Linux में जैसे flavors आते हैं वैसे RTOS के भी different flavors है. So उनका as an example we'll just study that. Then soft hard, then firm real time, then you know task management, then synchronization, inter-process communication mechanism, वो सब चीजें, okay. ये सब चीजें हम देखने वाले हैं इसमें. So it is gonna be fun. Let's get started with it. So what happens is that suppose you're playing with any operating system or like you're designing a system and you, oh sorry, I stopped sharing. I needed to stop my video, but I'd rather stop sharing the screen.
So suppose you are designing an embedded system, okay? सो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है कि कौन से सिस्टम है किस एप्लीकेशन पे बेसिकली यूज हो रही है, ठीक है? इसका यूज केस क्या है? तो होता क्या है कि there are variety of embedded systems and they are used at variety of places. So depending on our application, we design it, right? So suppose एकदम मतलब लोकल एप्लीकेशन है, ओके, रीजनल एप्लीकेशन है. अभी रीजनल एप्लीकेशन में सपोज आई एम जस्ट डिजाइनिंग अ सिंपल मॉइस्चर मॉइस्चर डिटेक्टर, okay, for agriculture purpose. Hmm. So there is this land, okay, and this is soil, okay. I'm deploying a sensor here, okay, connected to my system, okay, and this system is giving me some data, okay, and I'm using this data for well-being of my farm, okay. So this is a general application, okay. So and this is a sensor. So it is just simply collecting the data, giving back to the system, and system is giving me data. So these systems are called DAS, means data acquisition systems. Okay. So ये एक सिस्टम हो गई, ठीक है? एंड there could be a system, okay, there could be a system and aircraft wherein uh, the system could be traffic uh, and I mean traffic monitoring or collision avoidance and detection system. Okay, TCAS, I guess something like this. Traffic control and traffic and collision avoidance system. Yeah, traffic and collision avoidance systems. This is also an embedded system. So इस सिस्टम में भी काफी सारे रडार्स लगे हैं, ठीक है? ओके, उससे डेटा इंटरप्रेट हो रहा है, राइट? Some data is being interpreted, okay, that data is being processed, okay, and it is fed to the autopilot, again an embedded system, okay, autopilot to take the actions, okay. So ये एक embedded system है, ये एक embedded system है. So दोनों में difference क्या है? Major difference क्या है? कोई बताएगा मुझे दोनों में से? दोनों भी डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, ओके, मतलब ये प्योर डेटा एक्विजिशन सिस्टम है जिसमें मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया सिर्फ डेटा रीड हो रहा है, ठीक है? मैं कोड में या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर मेरा मॉइस्चर कंटेंट घट रहा है तो वाटरिंग स्टार्ट करना है, ठीक है? ये एक्शंस भी मैं ट्रिगर कर सकता हूँ यूजिंग दिस सिस्टम. सो these systems and these both systems similar, it is also collecting the data, it is also processing the data in the system, it is also taking some action, okay. Both the systems are doing the same thing, right or no? Yes, ये sir. दोनों सिस्टम सिमिलर है, राइट? Yes, sir. तो इनमें डिफरेंस है कुछ या नहीं है, मतलब कैटेगरी वाइज या जो भी है? मैं इनको डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो मैं क्या बताऊँ? व्हाट वुड आई सर, से इफ आई वर टू, या प्लीज. हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं. Hard and soft you are saying, okay, that is also fine, okay, because मैं ये फाइन क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या? क्योंकि इसमें कोई जवाब सही या गलत नहीं है, ठीक है? ये पर्सपेक्टिव की बात है जब कैटेगरी की बात आती है, ठीक है? लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि
इसमें टाइम की वैल्यू हार्ड एंड सॉफ्ट इज राइट, ओके, बट टाइम क्रिटिकलिटी दूसरे सिस्टम में ज्यादा है बिकॉज लाइव्स आर एट स्टेक, राइट, people are in the air. कुछ delay होता है तो when a system failure occurs then anything could happen, right? Whereas in the first system, हुआ क्या फर्स्ट सिस्टम में, मॉइस्चर डिटेक्ट कर रहा है बस और पानी देना है, पंप चालू करना है, दैट्स इट, ओके। सो क्या हो रहा है मैक्सिमम, अगर डिले भी हो गया कुछ, मतलब होगा क्या मैक्सिमम, कुछ होगा ही नहीं, थोड़ा सा पानी देने में डिले हो जाएगा, ठीक है। इन दैट सिस्टम ऑल्सो अगर डिले बढ़ गया तो क्वालिटी ऑफ आवर फार्मिंग और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट may degrade, right? That is again impact, but the impact is not fatal, right? That is the difference. मतलब तुम्हें पर्सपेक्टिव आ रहा है, आई मीन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। इवन इन द एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल, हमने पानी लेट दिया, ठीक है, सिस्टम फेल्ड, पानी लेट दिया हमने, लेकिन दिया ना पानी हमने, बट quality of the crop might get affected, okay, quality might get affected, but इधर हुआ क्या, यहाँ पे ये सिस्टम फेल हो गया, फिर कुछ तो डिले हो गया, then outcome could be fatal, right? That's the point I'm trying to make. So timelines दोनों भी सिस्टम में important है, right? Timelines are important in both of the systems, बट एक सिस्टम का इम्पैक्ट जो था वो काफी ज्यादा गंदा था, और एक सिस्टम का इम्पैक्ट जो था वो ठीक ठाक था, मतलब टाइमलाइन उधर भी जरूरी है, लेकिन बात नजरिए की है तुम्हारे, इधर मेरी क्रॉप की क्वालिटी खराब हो गई, मैं बोल सकता हूँ पानी दिया नहीं था, बट दैट इज नॉट फेटल, बट इधर लाइव्स वर एट स्टेक, दैट्स व्हाई, आई मीन दैट्स व्हेन आर्टोस कम्स इनटू पिक्चर, ओके। सो आर्टोस ही क्यों, ओके, एंड व्हाट इज आर्टोस, आई गेस हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन यूनिट में आर्टोस पढ़ा है ना थोड़ा, डू यू यस सर। रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट इट? हाँ। सो यस या सर। हमने मतलब इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा हुआ था, राइट, मतलब बस व्हाट इज आर्टोस है, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल ऐसे कुछ तो पढ़ा था। सो यस सर। या सो दैट वाज द थिंग इन आर्टोस, एंड अभी हम क्या करेंगे कि वो पहले वाला इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स आएगा थोड़ा सा, बट वी विल गो इनटू डिटेल्स। सो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया ना, यू विल अंडरस्टैंड गोइंग फॉरवर्ड, आई जस्ट वांटेड टू सेट द कॉन्टेक्स्ट अर्लियर। सो RDOS is basically what, it's a specialized, operating system here, right? It is an operating system, but it is specially designed to manage the hardware resources, right? Okay, and execute the task within the timing constraint. Okay, so it is an operating system. Okay, it is specifically designed for what? It is designed to manage the hardware resources. Okay, so ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हार्डवेयर रिसोर्सेज, ओके, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर सच सिचुएशन, ओके, बिकॉज scheduling and prioritizing and timing, okay, these three things are no better, handled by any operating system than RTOS. So that is what it is known for. So focus is on predictability, minimal latency and reliability, okay. Latency, reliability. So हमने, I guess even in, when we had started to learn embedded security, okay, I guess first few lectures were embedded security, right? तो उसमें भी हमने देखे थे दो तीन पॉइंट्स, उसमें एक पॉइंट आया था रिलायबिलिटी पे, राइट, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम।
and latency. Okay, so the systems, I mean, in order to make the systems highly reliable, okay, security is most of the times compromised because everything improves, right? Everything, right from coding to the hardware, everything is basically improved. And as the systems get complicated, security gets compromised. This is what we learned earlier. So होता क्या है कि जब भी you try to implement a solution and you select a wrong resource for that, you terribly, mess up with your system, and everything is just basically compromised. So art of when do we really select such systems? When actually there is a need. Okay, suppose aviation वाला application है, healthcare वाला application है, okay, जिधर latency, reliability and time bounds are, really a matter of concern. That is where we are going to use a system. So the thing is that RTOS is designed to ensure that the tasks are executed and completed within specific time limits. Okay, and this is critical in application where time constraints cannot be violated, like medical, then automotive. Okay, and in general purpose operating system, it is, I mean, better for multitasking, but still, you know multitasking is different and handling these things is different. Okay, that's where the difference between general purpose and uh, RTOS comes into play. Okay, so RTOS mainly focuses on the deterministic behavior, and where the execution time of the task is predictable and can be guaranteed, and we can take bet on that time. Okay, so this is basically basics. Okay, so the thing is आर्टॉस में और दो तीन चीजें हैं। जैसे वी क्लासिफाइड एम्बेड सिस्टम इन हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम। सो इसमें और एक आ जाता है फर्म रियल टाइम। ओके, फर्म रियल टाइम। सो हार्ड एंड सॉफ्ट, यू ऑफ कोर्स नो। अभी अभी तुमने एक्यूरेटली कैटेगराइज किया सिस्टम को, हार्ड, सॉफ्ट, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फर्म। ओके, तो मैंने वो एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो वाला जिसमें सॉइल का चीज था, राइट? सॉइल एंड एक मैंने एयरक्राफ्ट का एग्जांपल दिया था। सो you will definitely categorize that in like a hard real time. Okay, but soft and firm में क्या differences है अभी? तो वैसे डिफरेंसेस कुछ है नहीं। ओके, थियोरेटिकली देखा जाए तो बस सेंटेंसेस को इधर उधर घुमाते हैं ये लोग, लेकिन बस कैटेगरी है। सो व्हाट डू दे से इज दैट सॉफ्ट रियल टाइम में ना, जैसे कि वी नो दैट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम डिले इज टॉलरेटेड। ओके, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि पर्सपेक्टिव की बात है, नजरिए की बात है, वही बात है सॉफ्ट एंड फर्म में, नजरिए की बात है। तो सॉफ्ट में सी सेम एग्जांपल मॉइस्चर सेंसर की, मॉइस्चर डिटेक्शन की। सो मैं बोल रहा हूँ सॉफ्ट रियल टाइम में डिले कैन बी टॉलरेटेड। अभी वही सिस्टम फर्म रियल टाइम बन रहा है कि जब अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि ठीक है डिले तो टॉलरेट हो गया, लेकिन नुकसान हो रहा है, माय क्रॉप की क्वालिटी इज गेटिंग डिग्रेडेड, बट ठीक है, ठीक है, कोई फेटल चीज नहीं। सो दिस इज फर्म टाइम एंड दिस इज सॉफ्ट टाइम। कुछ आ गया समझ में या नहीं? हाँ क्या सर? आ गया ना? हाँ। जैसे कि मैंने बोला नजरिए की बात है, तुम उस प्रॉब्लम को जिस तरीके से देखोगे वैसे वो मोल्ड होगा। हम्म, तो वैसे ही वही चीज है सॉफ्ट एंड फर्म में। फर्म रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड एंड सॉफ्ट में तो एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, अभी इतनी टाइम हमने रिपीट किया जीवन में, ठीक है, तो वो जाने दो। फर्म के लिए मैंने वो एग्जांपल कोट किया, ठीक है। अभी मैं पॉइंट वाइज नहीं जा रहा हूँ, 1 2 3 4, मैं बस तुम्हें ये तुम्हारे सामने रख दूंगा चीजें, ठीक है। वो वाला। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग की वैसे, क्योंकि यू नो दैट, यू नो नाउ व्हाट इज आर टॉस। ओके, सो देन few more things that we know already. Okay,
सो फर्म में मैं सेम सिस्टम, ओके, मॉइस्चर वाला, मॉइस्चर, इधर भी मॉइस्चर लिखूंगा मैं। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा सॉफ्ट रियल टाइम का, कि हम यूट्यूब, ओके, सपोज यस, यू नो, कोई वीडियो बफर हो रहा है, ठीक है, उसमें टाइम डिले आ रहा है, ठीक है, आई मीन देर इज नो हार्डवेयर एज सच, देर आर हार्डवेयर इन पिक्चर बट not proper hardware based system here, but still an example, कोई भी साइट पे तुम वीडियो सर्व कर, ठीक है, वो बफर हो रहा है, ठीक है, टाइम डिले आ गया इसमें, लेकिन ठीक है, नो फेटल रिजल्ट्स, राइट, यू स्टिल वॉच्ड द वीडियो, राइट, स्टिल वॉच द वीडियो एंड it is tolerable, right, it's tolerable that delay, nothing fatal happen, वो ही फर्म बन जाएंगे, बोलेंगे नहीं, even though nothing happened, तुम इसमें कुछ भी बोल सकते हो, नो दिस, पैरामीटर गॉट अफेक्टेड, ओके, यू विल से कि बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या फिर लेट ज्वाइन किया लेक्चर, तो हमारे 5 मिनट वेस्ट हो गए जीवन के, वी हैड टू वेट 5 मोर। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इन फर्म रियल टाइम। सो ये कैटेगरी इंट्रोडक्शन था नया, ठीक है, तुम्हारे लिए फर्म रियल टाइम, जो कि आरटॉस में आता है, बिकॉज इसमें अभी टाइम तो इम्पोर्टेंट है ही, बिकॉज इट इज आरटॉस, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टाइम, ओके, कैलकुलेटेड ऑन बेस, टाइम बेस, तो उसमें भी कैटेगरीज बनाई है, टाइम में भी फर्म फर्म रियल टाइम डाल दिया, ठीक है, एनीवेज, सो characteristics we know already, like, deterministic behavior, then latency, then concurrency, then priority based scheduling, then interrupt handling, then real time performance. These all things we sort of know already, okay, so I'll just, we'll just quickly run through it, like in 2 minutes only. Deterministic behavior mein, it's like the behavior is really predictable, okay, predictable because tasks are executed in the known time frame, okay, which is essential in critical application, right, because there is a known time frame, that's why it is deterministic. This is not working, just a second. Is know that hum you write using pen, and that ink gets over, okay, even this digital pen works the same way, okay, this thing, okay, you can see this sometimes doesn't work, we have to change it. So yeah, so no, there's no time frame, that's why it's deterministic, definitely. Then latency, I need not explain, it has minimum delay in processing, basically the concurrency, okay, and art of support the simultaneous, execution of multiple tasks. So कॉन्करेंसी के बारे में मुझे बोलना है कि मल्टीटास्किंग जो पार्ट है, मल्टीटास्किंग अपने जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड आरटॉस का, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो सो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग एंड थ्रेड्स रन होते हैं, राइट, सो ये तुम इसलिए मैंने पूछा, तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, सिस्टम प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली आरटॉस में होता क्या है ना, कि प्रोसेसेस होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, जो भी प्रोसेस अगर P1, P2, P3, ये तीन चीजें रन कर रही है ना एट द सेम टाइम, तो इसका अल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव पे डिपेंड होता है कि क्या होगा, मतलब अगर इसको रिसोर्सेस चाहिए तो इट कैन ओवरटेक द अदर प्रोसेस एंड दिस टू कैन ओवरटेक द थर्ड वन, सो ये चीजें होती है इसमें, ओके, depending on the settings we have done, again everything is customizable, okay,
ऐसे नहीं है कि it offers as a feature, so ये तुम्हें करना है ये use, so you can still customize. So it is that, okay, it's about that. So it has interrupt handling, excellent interrupt handling, okay, interrupt handling basically. And definitely real time performance, so you know it is designed for that, so it will do that. So key components and kernel task management. So basically, I'm just going through the stuff I have ready, okay, kernel and task management and interrupt management, ये सब तो basic चीजें है, तो scheduling algorithm. Okay, so key components are task, okay, such as kernel, then we have task management, okay, then there is interrupt management, memory management, and inter-task communication. So where is this? Interrupt, interrupt management, memory management, and last but not least inter-task communication. तो ये सब देखेंगे हम. उसमें से I'm picking task management first, okay. So task management में again there are few things, okay. First thing is task creation, okay. अभी टास्क है, ठीक है. सपोज देर आर 4 थिंग्स टू बी डन, 1 2 3 4. सो इसमें से हर एक चीज 1 2 3 4 जो भी 4 पॉइंट्स हमने बोले, so everything is considered as a task, okay, and every task has its own life cycle, okay. There are certain parts to it, like task creation, then there are states of that task, okay, then there are types of such tasks, then task की priority होती है, then scheduling होता है इन tasks का, ठीक है, and then scheduling algorithm के type आते हैं, then preemptive and non preemptive scheduling आ जाती है, ठीक है. Then examples will see, okay. So basically ये जो task है इसी के around Aratos revolves. So what happens, uh, the life cycle of this task is creation, management, prioritization, and uh,
I guess it gets over and the state is called as termination, maybe. If I'm not wrong. Yeah, termination. So this is the basic life cycle, and in each phase of it is choreographed. Every phase of it is choreographed basically. Okay. So task creation be statically or dynamically. Statically and dynamically means both चीजें available है इधर. मतलब can you imagine like how customizable things are in our task? Means there is a task which can be defined statically, okay, and dynamically as well. Statically means हम पहले से प्लान होगा जो टास्क, ठीक है, पहले से प्लान होगा. एंड डायनामिकली मीन्स अगर कोई इंटरप्ट बेस्ड कुछ चीज होती है तो हम डिफाइन करके रखा हुआ चीज रन हो सकता है, फिर डायनामिकली वो एक्शन ले सकता है, ठीक है. That is dynamic task creation and static. Okay, I mean it is self-explanatory, of course, but still. So what happens is uh, every task is consuming some sort of hardware, right? So the task management in RTOS has to be has to be done in a particular way. Okay, and that's what we wanna see how it's done. So tasks are unit of work executed by RTOS. Unit of work means you can say a function maybe. Okay, it can be created statically or dynamically. Okay, it includes managing the states and priorities and attributes. So managing the priorities and attributes means what we'll study. States. States. Okay, let me first. Okay, so these are states. So when task is in ready state, it means that the task is ready, but it's waiting to be executed. Okay, it is waiting for what? It is waiting for CPU time. Okay, CPU is busy in something. Okay, when I say state of my task is ready. Okay, task जब ready state में है, so it is ready to be executed but waiting on CPU to give some time because CPU is busy doing something else. Okay, then running. Okay, running state में क्या है? Task is currently executing. Okay, executing. Okay, then blocked. Blocked में क्या होता है? Task is waiting for an event or a resource. Okay, ब्लॉक स्टेट में मतलब टास्क ब्लॉक स्टेट में कब जाता है? दो केसेस है इसमें भी, ठीक है. एक बार एक बात जो है कि अगर रेडी स्टेट में टास्क है, ठीक है, टास्क इज वेटिंग इन अ रेडी स्टेट, ओके, for longer time and it is not getting resources, then we call it a block task. Okay, another scenario is after the task starts running, it gets blocked because of some other resources. Okay, that resource could be CPU. Okay, it could also be waiting on an interrupt. Okay, such resources could hamper the execution of task, and that is why it is called the blocked state. Okay, it is waiting for maybe input output signal, or it could be anything. It could basically, I can say, it could be because of an event. Okay, event that has occurred, or
that has not occurred anything. Okay, that is a block state, and terminated is obvious. Okay, it has completed or it's terminated by a system. Okay, both things again, completed or terminated. Anything is possible. Okay, then these tasks are again classified further into periodic and aperiodic. कोई बताएगा मीनिंग मुझे पीरियोडिक और पेरियोडिक का? सर ऐसे मतलब प्रॉपर ऐसे क्या बोलते हैं पर्टिकुलर ऐसे शॉर्ट टाइम मतलब एकदम उसके लिए मतलब पीरियोडिक में ऐसा स्टिपुलेटेड टाइम के लिए ही रहता है और ए पीरियोडिक में ऐसा वो I'll tell टाइम you. ऐसा Okay, डिसाइडेड नहीं रहता है। time. No, it's not about the time. Mostly, you period. ये तुमने समझ लिया ना periodic. Okay, so periodic is something that repeats after a time. Okay, aperiodic is something that doesn't repeat. Okay, periodic means repeated after particular time. एक टाइम के बाद मतलब सिंपल एग्जांपल दो ना, मैं साइन वेव इज अ पीरियोडिक। अगर सेम टाइम इंटरवल के बाद ये ये बिहेवियर रिपीट हो रहा है, देन आई कॉल इट एज अ पीरियोडिक बिहेवियर। ओके, मींस एक पीरियड के बाद ये चीज रिपीट हो रही है बेसिकली। ओके, दिस इज पीरियोडिक। ए पीरियोडिक उसका उल्टा, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, द टास्क आर मतलब टास्क के हिसाब से क्या है, तो टास्क आर एग्जीक्यूटेड, टास्क आर executed at a particular interval. Okay, मतलब एक इंटरवल के बाद टास्क एग्जीक्यूट होते रहेंगे, दैट इज पीरियोडिक टास्क। मतलब तुमने एक तुम्हारा स्टैटिक टास्क, ठीक है, स्टैटिक टास्क में ऑलरेडी तुमने डिफाइन किया है, एंड ऑल द टास्क आर इन रेडी state. Okay, and you define it to be periodic, then you have to give the period after what period you want to execute this task। मतलब ये भी चीज है आर्टॉस में कि सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अ, तुम्हारा होम ऑटोमेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें तुमने एक ये रूम फ्रेशनर डिस्पेंसर, रूम फ्रेशनर लगाया है। ठीक है, रूम फ्रेशनर जैसे पीरियडिकली वो ऑटोमेटिकली ये कर देता है, वो पुश हो जाता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली it keeps the room fresh. Okay, in a regular interval of time the spray, automatically the thing got pushed, and the thing gets pushed, and it sprays the aroma or the flavor or the fragrance around the room। So that could be one example। मतलब वो एग्जांपल नहीं है आर्टॉस का, बट मैंने बताया कि पीरियोडिकली वो प्रेस हो रहा है अपने आप, राइट, कि वो टास्क पीरियोडिकली रन हो रहा है। ए पीरियोडिक इज ओनली वन टाइम, या फिर मैंने on an interrupt this task should execute। Okay, it is that type of task, it is aperiodic। Periodic is it's something that executes, okay, again and again। Hybrid is task that combine periodic and aperiodic behavior। Means sometimes it is periodic depending on the situation। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर ये इंटरप्ट आता है तो एग्जीक्यूट दिस टास्क इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम। एक हाइब्रिड में आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड ये इंटरप्ट नहीं आता है तो एग्जीक्यूट इट ओनली वंस। ओके, दिस इज हाइब्रिड बिहेवियर। ओके, द टास्क की प्रियोरिटी होती है, अगेन स्टैटिक प्रियोरिटी, डायनामिक, ये दोनों ये मैं लिख भी नहीं रहा हूँ इसको। वेरी सिंपल, स्टैटिक priorities you define earlier, dynamic priority can change during the execution। Okay, based on the task deadlines। Okay, so priority inversion क्या होता है, lower priority task can block the higher priority task if both share the same resources। Okay, अगर wait let me write it।
हम्म, इसमें है अगेन स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, ये बहुत तुम्हें पता है। स्टैटिक मतलब तुम पहले से डिसाइड करोगे टास्क की प्रायोरिटी की ये टास्क की ये प्रायोरिटी है। डायनामिक मतलब बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ माय कोड it will be decided. Okay, and and priority. Okay, this is based on scheduling. Okay, this is based on scheduling. Then there is something called priority inversion. Inversion मतलब अगर कोई there is a low priority task and there is a high priority task. Okay, so low priority task can overtake the priority of high priority task. Okay, when the situation comes, ये भी होता है आपस में। Okay, low priority task can block the higher priority task कि both share the same resources. Okay, इसमें भी कंडीशन है अगर दोनों सेम रिसोर्सेस यूज कर रहे हो तो। ठीक है, ठीक है। देन scheduling. Okay, scheduling is basically, you know what, the process of deciding which task to execute at given time. Okay, so it determines the order of task execution. Okay, it ensures the real time constraint. Okay, like deadline submit and all. Okay, then what it does is basically it minimizes the task or response time, then maximize the resource utilization and ensures time critical, task meet the deadline. So this is basically about the scheduling. Okay, then there are scheduling algorithms. Okay, like preemptive scheduling, non-preemptive scheduling, fixed priority scheduling, dynamic priority scheduling, then earliest deadline first scheduling, then rate monotonic scheduling. So these are the uh, things. I will start with the scheduling. It's 9-7. Okay, एक दो types of preemptive non preemptive पढ़ लेते हैं, then we'll stop out the day. So I guess हमने ये देखा है, right or no? नहीं Preemptive सर, non preemptive नहीं देखा है ना? नहीं। Okay. Preemptive and non preemptive. So basically so preemptive is basically, a higher priority task can interrupt a running low priority task. Okay, suppose there is a high priority का एक task है, ठीक है, and there is a low priority का task. अभी जब भी मैं ऐसे राउंड करूंगा ना किसी भी चीज को ऐसे लिख के, दैट मीन्स इट इज अ टास्क। ओके, इन आर्ट हाउस ये समझ लो, एक हाई प्रायोरिटी एक लो प्रायोरिटी। ठीक है, सो सपोज मेरा ये टास्क है जो करेंटली रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो ये अभी रन हो रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन हो क्या सकता है कि हायर प्रायोरिटी टास्क एंड इंटरप्ट अ रनिंग लो प्रायोरिटी टास्क। तो अगर मैंने प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की है तो इसका मतलब ये है कि मेरा हायर प्रायोरिटी टास्क कभी भी इंटरप्ट कर सकता है अगर लो प्रायोरिटी का टास्क रनिंग स्टेट में है फिर भी। ठीक है, a higher priority task can interrupt a running low priority task is basically preemptive scheduling. And non-preemptive क्या होता है? Basically उल्टा, once a task starts executing it runs to completion unless it blocks all vulnerability yields. Okay, मतलब इस इधर भी सेम केस है, सपोज हाई एंड लो प्रायोरिटी है
अगर ये टास्क है ये अभी रनिंग स्टेट में है तो ये कंप्लीशन तक रन होगा। ओके, ये कंप्लीशन तक रन करेगा, ठीक है, अनलेस इट हैज सम ब्लॉकर। ओके, अगर कोई ब्लॉकर है या फिर इससे कोई वल्नरेबिलिटी अराइज हो रही है तो हम इसे फिक्स करेंगे या पैच करेंगे, ठीक है। तो ये तब तक रन, मतलब ये इसका एग्जीक्यूशन ऐसे ही होगा। सो it runs it runs until completion unless there is some blocker or unless there is some vulnerability that we need to fix. Okay, so this is preemptive non-preemptive scheduling. In preemptive, what I'm saying is my higher priority task can interrupt the running low priority task, and मतलब उसको बोल सकते हैं I need to run, we need to stop, okay, it can interrupt that basically. And in non-preemptive, what happens is that higher priority task cannot do this, okay. Low, even the low priority task is running right now, it will run to the completion, and then only the rest of the things will happen, okay. तो ये ऐसी ही चीज है, ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है इसमें। सो ये सब डिटेल में भी देखेंगे हम। ओके, आई थिंक if you guys have no doubts, we should be good to stop for the day, okay? And we'll continue tomorrow and day after, okay? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। शुभम बस थैंक यू बोलने के लिए अनम्यूट करता है, नहीं सर। आज नहीं भी बोला।